हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ निशन। स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो हम कर रहे हैं रेलवेज़ की क्विज़। तो देखते हैं, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे तो किस किस मतलब किस कहाँ पे है? तो चिनाब ब्रिज being a constructed on which following river कि चिनाब ब्रिज। The Chenab Bridge is railway steel concrete bridge under the construction between Bakal and Kauri in Rassi district, Jammu and Kashmir in India. When complete, the bridge will span Chenab River at the height is 359 meter, 170 feet above the river, making it the world highest bridge. Gorakhpur, which has the longest railway platform in the world, is located which of the following state? तो गोरखपुर सिटी कहाँ? राप्ती, द बैंक ऑफ द राप्ती रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश. इट इज़ द नियर द नेपाल बॉर्डर 273 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द स्टेट कैपिटल लखनऊ. गोरखपुर कहाँ पे है? लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन हैज़ all three gauge broad meter narrow Siliguri. What is the width of the broad gauge railway line in India? What is the width of broad gauge railway line in India? 5 feet 6 inch. Track gauge in India. Indian Railway currently has a 4 different grooves. So the 1676 मिलीमीटर 5 फीट 6 इंच ब्रॉड बेड एंड 10,000 मिलीमीटर 3 फीट 3/3/8 इंच मीटर ग्रेज एंड 2 नैरो ग्रूज 2 फीट 6 मीटर 762 मैनोमीटर एंड 2 फीट 61 मीटर. देश का इतिहास बदला गया. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है तमिलनाडु में. और व्हील एंड एक्सील प्लांट है हमारा कर्नाटक में. रेलवे कोच फैक्ट्री है पंजाब में. Which of the following stadium was formerly known as Victoria Terminus? कौन सा स्टेशन जो है जो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाता है? तो छत्रपति शिवा टर्मिनल, आल्सो नोन एज द फॉर्मर नेम ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस, एंड हिस्टोरिकल टर्मिनल, ट्रेन स्टेशन एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज. फेयरी क्वीन, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन, piles between New Delhi and Alwar. The Fairly Queen, also known as East Indian Railway near 22, is an 1855 built steam locomotive storage by Loco Work Parmember. Chennai is the 1997 and housed at Rewari Railway Heritage Museum. It is occasionally run between New Delhi to अलवर. फेरी क्वीन इज ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव रेगुलर ऑपरेशन है, पाइल्स न्यू दिल्ली टू अलवर. हु इज़ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? हु फॉलोइंग द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? जॉन मिथाई. आफ्टर इंडियन अटेन इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 1547, जॉन मिथाई बिकम द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. He also represent the first railway budget. देश का इतिहास बदला. शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन were introduced in 1989 to commemorate for the 100th anniversary of which of the following personality? शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1989 में, उसने 10th 100th सेंचुरी सेलिब्रेट की. किस पर्सनैलिटी पे? तो जवाहरलाल नेहरू. Who was the Governor General of the Indian first? Lord Dalhousie. In 1952, Madras Guarantee Railway Company was incorporated. The association of the Lord Dalhousie inaugurated a new chapter of history to British India. He functions as the Governor General of the 1848 से 1506 तक.
The section of the rail is decided on the basis of type of the rail. The section of the rail is decided on the basis of type of the rail, spacing of the sleeper, speed of the train, all of the above. What is the rank of India in the world is length of railroad network. What is the rank of India? इंडिया की क्या रैंक है वर्ल्ड के अंदर इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ रेल रोड नेटवर्क? तो सबसे पहले USA स्टे एज अ फर्स्ट, जिसका 1,49,910 किलोमीटर है। फिर है चाइना इज सेकेंड वन, 131,000 किलोमीटर। फिर रशिया एंड थर्ड 85,500। इंडिया इज़ द फोर्थ विद रेल रोड नेटवर्क की लेंथ क्या है 67368 किलोमीटर। which of the following run the first train from Boriwo to Thane 1953? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 16 अप्रैल 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ऑपरेट द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया from Boribandra to Thane with 14 carriage and 40 passenger. The train, which had 3 named locomotives, Sindh Sultan Sahib, took off the embark of 4 hour and 14 minute journey to an hour and 15 minute journey to Thane. The Maitri Express connect India with which of the following country? Bangladesh. Which of the following largest zone in the term of route kilometer? The Northern Railway is one of the 14 zone, 17 if Kolkata Metro include, and the northernmost zone of the Indian Railway. It is the headquarter of New Delhi Railway Station. Northern Railway Station is one of the 9 old zone of the Indian Railway, also biggest tram to network having 6807 kilometer route. Which of the following? The Northern Railway is one of the 46 Northern Railway in India. It headquartered in Delhi. Northern Railway is a 9 old zone, biggest in term of kilometer route. Also Asia is Mughalsarai. अच्छा क्या नाम है इसका? मुगलसराय. Through which of the group state Konkan rail run? Konkan rail Maharashtra, MKGK, महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा केरला, महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा केरला. Which of the following zone headquarter city combined incorrect? नॉर्थ वेस्टर्न का जोधपुर में इनकरेक्ट है. साउथ ईस्ट का बिलासपुर, ईस्ट सेंट्रल का अजीपुर, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर. Which of the following zone administered the Matheran Hill Station? Central Railway. The Matheran Hill Railway is a 2-foot narrow gauge heritage railway in Maharashtra, India, which is administered by the Central Railway. It covers a distance of 21 km, cutting a swath through forest and connecting Neral to Matheran in Western Ghat. The MHR is the trendy list UNESCO World Heritage Site. देश का इतिहास बदला गया. In which city the Indian Railway Institute Financial Management being set up announced the railway budget 2013? कौन सी सिटी इंस्टीट्यूट में have announced the railway budget 2013? सिकंदराबाद. The proposal of set up Indian Railway Institute of Financial Management has included a railway budget 1314 cost 9.226 crore of Sikandrabad. In which of the following cities is a National Railway Museum located New Delhi? The National Railway Museum Chanakyapuram, Delhi exhibit history of the rail transport in India. The museum was inaugurated कब हुई थी 1 फरवरी 1977. The span over 10 acres. It is open every day except Monday and national holiday. नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में. और वो कब इंटीग्रेट हुआ था 1 फरवरी 1977 में. 10 एक्सिस में बनी हुई है
और ओपन होती है मंडे और नेशनल हॉलीडे के अलावा। द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बाय द ब्रिटिश बॉम्बे टू ठाणे। How many zone in Indian Railway Organization? 18. 17 zone used to therefore South Coastal Headquarter Visakhapatnam nearest member of 18 zone. Which state is the longest route kilometer of railway line in India? Uttar Pradesh. Which state has the longest route kilometer of railway line in India? Uttar Pradesh. 8725 Rajasthan 5780 Maharashtra 5602 Andhra Pradesh 5241. The point up which is the new railway track land anytime is called railhead. The point up to which the new railway track land to anytime railhead.